We are doing a problem where we want to find out the polynomial which fits the given data using Lagrange's interpolation. We are here. Now we want to simplify all these. Yes, anybody can tell me what is x minus 1 into x minus 2 into x minus 3? Yes. Anyone can quickly tell me what is x minus 1, x minus 2, x minus 3? Do you hear me? This will become x square minus what is x? We will do it roughly quickly. X minus 1, x minus 2 into x minus 3 is what? X square minus 3x plus 2 into x minus 3. So that will be x cube. The highest term will be x cube, suppose. Ma'am, we cannot hear you. I'm not talking. I'm just asking. Simplify and you tally with my. Ma'am, there will be one more term after 9x, 2x. Ma'am, that is 9x plus 2x. Excuse me, ma'am. Ma'am. Yes. What happened? Ma'am, since we have to find f as 0, why don't we directly substitute 0 in place That's of x? what I told you, Siddhita. I want the polynomial first and hence जब कहते हैं तब हमें पहले polynomial ढूंढनी है, okay? Ma'am. Okay. We are asked to find out the polynomial first. Otherwise, we would have substituted. Directly answer पूछा होता तो. What is our question? Find Lagrange's polynomial. Do you read it here? Ma'am. So first you have to get the expression in terms of x. Yes, ma'am. Yes.
Is this correct? What I have done, second term? Last it will be x cube minus 4x square plus x plus 6. Yes, yes. And the whole thing, I have multiplied here by 6, huh? Yes, ma'am. Numerator and denominator. So please do that also. I'm muting myself. I'm writing it. Ma'am, we have to multiply the coefficients inside in the equation. Where? ये ना? The 25 upon 24 ये हम बाद में final. ये हम बाद में करेंगे. करते हैं. विपाशिनी. Okay. Let us first do these brackets. हाँ मैम ठीक. Okay? I'm doing these brackets only first. Okay. Yes, is this correct? What we have done? Yes ma'am. Yes, तो ma'am. अभी सिर्फ हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सब जगह पे मैंने डिनोमिनेटर 24 कर दिया है. ओके, everywhere. So you just multiply 1 upon 24. You can take common. Okay, so what you do, you just multiply by this numerator inside every number by this numerator. Do you understand? Yes or no? Yes ma'am. So this will become 25x cube. Can we collect the like terms together? देखो 25x क्यूब है. हाँ, जो जो चला जाता है मैं ले कैंसिल कर रही हूँ. 25x क्यूब आ गया. आपको मिल गया. Just a minute.
गर्ल्स 25x³ आ गया यहाँ पे कितना आएगा 66x³ लेट अस 66x³ 66x³ माइनस प्लस 66x³ फिर माइनस ये माइनस जाएगा -64x -64x³ प्लस 3x³ ये समझ में आ रहा है सबको सारे x³ वाले टर्म्स एक साथ लिए मैंने नाउ नेक्स्ट कैन यू टेल मी द नेक्स्ट प्लस अभी x² वाले टर्म्स लेते हैं सारे x² वाले 25 इंटू -6 सो -150 ओके ये गया नाउ दिस इज -4 इंटू 66 सो -264 x² okay here this will become minus plus 3 into 64 कितना हुआ 3 into 192x² and here the last term -2 into 3 is -6x² प्लस अभी सारे x वाले टर्म्स 25 into 11 is 275x then 166 plus 66x then this is minus and minus plus 1 into 64 so plus 1 that means 64x तो ये x वाली टर्म भी चली गई then this is -1 into 3 so that is -3x plus all constants now -18 into 25 how much -18 मैम क्या हुआ एनीथिंग नहीं होगा 6 होगा कहाँ पे कांस्टेंट कहाँ पे कांस्टेंट वो जो फर्स्ट इक्वेशन x³ -6x+11x -18 हाँ वो 6 होगा ना 6 आ रहा है हाँ मैम कांस्टेंट 6 आ रहा है -6 वापस मुझे करना पड़ेगा ये क्या था ये दो ब्रैकेट्स का क्या आया था x³ -3x+2 and x -3 so that is हाँ x³ आ गया इसका x³ आ गया फिर इसका -3x² और इसका भी -3x² तो -6x² आ गया then -3 9x plus 2x 9x plus 11x आ गया and this is -6 18 कहाँ से लिखा फिर मैंने मैम I got 18 I don't know तभी आप सॉल्व करते बोला था मैम मैंने बोला था क्या अच्छा -6 ना ठीक है हाँ तो -6 करेंगे तो ये आ जाएगा -150 अभी इसका भी हो गया अभी ये हो गया 66 into 6 396 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड 3 into 64 3 into 64 3 into 64 192 so that is minus and the last one now 2 into 3 6 plus 6 okay have you written everything so I will erase the previous part this part okay ये हो गया आपका लिख के ये पॉलिनोमियल ऊपर का हाँ
Yes, so P3x क्या आ रहा है अभी हमारा 1/24 I am keeping as it is. Inside how much this is? 25 plus 3 28. 28 plus 66. कितना हुआ 28 plus 66? मैम टोटल इज 30. 30 आ रही है इसकी टोटल. हाँ मैम 30x3. 30x cube, okay. Then minus 220x square. 220 8x square. 28 plus 402x plus 60. but okay, we will check whether it fits our data or not. Ma'am, I'm getting a different answer. The answer is different. Me too. क्या आ रहा है तुम्हारा? कहाँ पे हमने गलत किया है वो? मैम 24 कॉमन आता है सब में तो कैंसिल 24x क्यूब माइनस कहाँ मैम पे? मेरा फाइनल आंसर आ रहा है. 24 यस मैम कहाँ आई एम पे? गेटिंग मैम ये क्यूब के अंदर 1/24 into 24x क्यूब. ये कितना आ रहा दैट शुड बी है? माइनस 3x क्यूब. कौन सा? मैम 24x 24x क्यूब. मैम देर इज नॉट प्लस 3, देर इज माइनस 3x क्यूब. -3 ये वाला. यस मैम. तो यस मैम. कितना आ रहा है ये? 25 plus 66 24x क्यूब. ये आएगा 91 minus 67. So that will become 24. So ये 24x क्यूब आ रहा है. ओके, बाद में बाकी माइनस सब 216x स्क्वायर्ड. 216x स्क्वायर. ये सब सही है क्या? ये सब सही है क्या? मैम उधर आई थिंक कुछ साइन में प्रॉब्लम हुआ है. यस मैम. ये सही है क्या? मैंने जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये नंबर सही है क्या? बोलो. ये बन जाएगा मैम वो +6 होना चाहिए. +6x स्क्वायर्ड. लास्ट ब्रैकेट जो था ना 1/8 वाला उसमें सारे साइंस अभी चेंज हो जाए क्योंकि वो माइनस था ना, माइनस वो प्लस लिख दिया था मैंने गलती से, मेरी एरर हो गई थी. तो फिर वो लास्ट ब्रैकेट के सारे मतलब जो लास्ट वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगा साइंस. तो ये भी -6 हो जाएगा क्या? मैम Yes, ma'am. थर्ड ब्रैकेट के पहले भी माइनस यस मैम. यहाँ पे ना उसकी भी साइन. ये बताओ क्या क्या आ रहा है. चलो 24x क्यूब माइनस फाइनल आंसर हाँ नहीं ये टू मुझे अंदर 216x स्क्वायर प्लस 408 x minus 48. so if you so सब Then में ma'am 24 आ रहा है. So yes ma'am. 4 9s are Then ma'am x this. minus 9 plus 17x minus 2. This is final answer. So please check all your signs carefully. Okay.
So now let us check whether this is correct or not. हमारे वैल्यूज क्या थे? x -1 1 2 3 और -1 के लिए क्या था? -25, 1 के लिए 11, 8 and -1. So let us check it quickly whether this is correct or not. Okay. So if I put x equal to -1 here, तो क्या आएगा? -1 क्यूब -9 into -1 square plus 17 into -1 -2. So ये कितना आएगा? -1. Now -1 square will be +1 and into -9. So this will remain as -9 -17 -2. So this is -25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. ज्यादा आ रहा है. -29 आ रहा है मेरा आंसर. हाँ मैम -29 आ रहा है. क्यूब -9x² प्लस 7. दिस शुड बी +2 रहे. यहाँ पे ये +48 है. वो चेक करो. प्लीज चेक योर साइन. प्लीज चेक योर साइन गर्ल्स. Yes ma'am, now it is coming. It's 20. When this is +2, this will be 17, 9, 26, 27. So this will be -25. Now, this is what is the answer given in the textbook. Okay, this is exercise problem, not solved one. So when I put 1 cube -9 into 1 square plus 17 into 1 plus 2. So that is 1 minus 9 plus 17 plus 2. So 17 plus 2, 19 plus 1, 20 minus 9 is 11. So this is satisfying for 1 also. 2 के लिए 2 cube minus 9 into 4 हो जाएगा plus 17 into 2 plus 2. So that is 8 minus 36 plus 34 plus 2. So 8 plus 2, 34 plus 2 is 36. So this 36, this will go. So answer is 8. So it's 8. 3 के लिए 3 cube minus 9 into 3 square plus 17 into 3 plus 2. So that is 27 minus 81 plus 51 plus 2. So 51 plus 27 is 78. 80. So -1. Okay. Are you getting it? This is your final answer. Okay. And now, Siddhita, as you are asked to find, therefore, what will be 0? P3 0. So 0 cube minus 9 into 0 square plus 17 into 0 plus 2. So your answer is f of 0 का आंसर कितना है आपका? 2. 2. Is that okay? मैम वो इक्वेशन चेक करने के लिए सब x की वैल्यूज डालनी पड़ेगी क्या? हाँ, एक दो वैल्यूज डाल के तो देखना पड़ेगा विपाशिनी. ओके मैम. सारा मैंने यहाँ पे अभी सारी वैल्यूज डाल के देखी. इफ यू हैव टाइम इन द पेपर इन एग्जाम then you can check, but at least you should check 2 values so that you will understand. Have you understood Lagrange's interpolation now? Yes, ma'am. Okay. Now let us see one more application of Lagrange's interpolation. Okay. What is that? Let us see that. Do you remember something called as partial fractions?
Partial derivatives, something like No, that. partial fractions. Have you, do you remember this? Partial fractions. In integration, you have used this partial fractions. If you want to integrate such kind of thing, then you write this as this. You write as x. This is nothing but x minus 3 into x minus 2. I have taken. Then this becomes. Do you remember Yes, ma'am. this? And then you find out a and b Yes, ma'am. values, yeah, and then you find out a b values and you separate them, and then the answer would be log of x minus 3, a times log of x minus 3 plus b times log of x minus 2, right? This is what you used to do. So we want to use Lagrange's interpolation to express the given function as sums of partial fractions. We are not going to do anything with integration. Okay. So this is one of the applications, you can say. Directly, we will write the problem. There is no theory as such. You just have to mechanically apply the Lagrange's formula. Okay. So use Lagrange's formula to express the function three x square plus x plus 2 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 as sums of partial fraction. Sorry, I'm so sorry. Okay. So sometimes this denominator will be given to you as a product of linear factors. Okay, product of linear factors, or directly it will be a rational function. That means the denominator will be also a polynomial like this. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर क्या था? x माइनस 1 अभी हमने किया था ना, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आंसर था ना इसका. ओके गर्ल्स, डू यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So see, Yes, so ma'am. either ये ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाएगा डिनोमिनेटर में, या फिर प्रोडक्ट दिया जाएगा ऑफ लीनियर फैक्टर्स. पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो आपको ये फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे डिनोमिनेटर के. ओके तो नाउ वी वांट टू एक्सप्रेस दिस एज partial fractions, sum of partial fractions. So what is the key point here? You have to look at these numbers 1 2 3. Right now these numbers are equally spaced. Okay, so आपको जो numbers यहाँ पे दिखाई देंगे x minus a, x minus b, x minus c. Suppose आपके यहाँ factor है x plus 1, तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा x minus minus 1. Okay, are you getting it? So your number will be, x value will be minus 1. So you have to identify the numbers. So आप numbers कैसे identify करोगे? x minus a, x minus b, x minus c. So these are your x0, x1, x2 values. Okay, have you understood this? Yes, ma'am.
So what we will do now, we will take numerator as our fx. Okay, take numerator as fx. Therefore, what is your numerator? Fx is equal to 3x square plus x plus 2. Okay. Now we tabulate the values of fx for which values of x? जैसे मैंने अभी कहा, which values? These values 1, 2 and 3. Do you understand this? Girls, do you understand this? Ma'am, do we have to write this in notebook? Yes, of course. At least write down the sum. हम पूरा नहीं कर पाएंगे अभी, 5 मिनट बचे हैं, but we will tabulate the values at least. So 1, 2, 3 जो डिनोमिनेटर में आपको x माइनस है, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, जितने सारे लीनियर फैक्टर्स है उतने सारे x वैल्यूज के लिए हम ये न्यूमरेटर की वैल्यू ढूंढेंगे. Okay, so x and fx. So x values are 1, 2 and 3. Substitute them here in fx. So what are fx values? 3 plus 1 plus 2, that is 6. Then 2 square. 2 square is 4. 4 into 3 is 12. 12 plus 2, that is 16. And for 3, 3 square is 9. 9 into 3, 27. 27 plus 3, 30 plus 2 is 32. Have you understood this step? Yes, we will stop here. We will continue with this example only in the next lecture. Now let me take your attendance.